This is your teacher Azka, and today we have a topic, and the topic is related to your business studies AS levels, and the topic is sources of finance. So, as you know, students, that sources like finance is very important for the business. Like if a business want to grow and maybe want to survive in an initial time period, like in initial 2 years of the business, and maybe if a business wants to expand their operations, and if a business wants to buy some machinery and buy some you can say that a factory to expand its operations, so business need finance. So we know that why finance is so much important for the businesses. So we have a topic today which is related to that how many sources of finance we have, because like we have a lot of sources of finance. So basically we just divided those sources of finance into two, you can say that categories. So the number one is internal source of finance, and the second one is external source of finance. So first we are going to talk about the internal source of finance. I think I should choose another color. Okay. So first we are talking about the internal source of finance. So what is internal source of finance? Internal source of finance क्या होते हैं? Okay, so internal. Okay, so internal source basically that business don't need to go outside to lend money, to lend some money or to raise finance. Internal source means that business will find any kind of source which internally, like within the business, and business don't need to pay any liability or don't need to pay any kind of interest, which may be, you can say that skew their profitability, or maybe lower their profitability over the years, when like a business have to pay some kind of interest like in a month. So it means that a business profitability will um lower, okay, gradually. So that is why internal source of funds, somehow it is very important. It is very, you can say that, beneficial for business, because in this internally available finance, you can not go outside. Any interest. Okay, so let's talk about the um, different sources of finance. So first of all, we have like the first source which a business can like take out internally, which is retained earnings. Okay, if you are a accounting student, so you must know that what is retained earnings. When you are calculating the profit for your business, so you must know that there is a profit before tax. When you excluded all the expenses from gross profit, so you will have profit before interest. Profit before interest. Okay, so this is your profit before interest, and after that you have to less from this the tax which you have to pay after a year.
So you have to deduct this from your profit. So after that, you will have profit after interest, sorry, profit after tax. Okay, so like we are just supposing that this is the amount of profit after tax. So after that, like we have to pay some dividend to our preference shareholders. So after that, we have to do minus our dividends from it. Okay, like this is not important. Like this is not the part of your syllabus. Dividends, and after that we have retained earnings. Okay, so these are our retained earnings. So retained earning means that there is nothing left to be deducted from our profit. Okay, so this is our pure profit actually. You can say that there is nothing else left that we have to deduct from this retained earnings. So retained earnings, इसमें से we already deducted our tax and our dividends also. So we have this money and we can use it for expansion, for survival, for our growth, like anything like this. अगर बिजनेस पे कोई भी प्रॉब्लम है, बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है या बिजनेस फॉर एग्जांपल ग्रो करना चाहता है, मर्ज करना चाहता है, टेक ओवर करना चाहता है, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन इन इंटरनल सोर्स दैट वी कैन यूज this retained earnings. Okay, so we don't have to pay this amount to any banker, to any banker, or maybe to any debenture or something like that. Okay, so this is a very good option for us if we want any you can say the finance form like within our business. Okay, so this is our retained earnings. So what are the benefits we will have if we use this retained earnings as our internal source of finance basically? Okay, so the first of all, if we are talking about the pros and cons of the retained earnings, uh, there is no liability, first of all. This is the same point you can use whenever we are talking about the internal sources of finance. There is no liability. You don't need to pay back this money. Okay, no interest, quick cash. You don't need to wait for different documentations. You don't need any security. So that is why it is kind of quick cash. अगर आपको पैसे बहुत अर्जेंट चाहिए फॉर एग्जांपल, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। आपके बिजनेस में ही ये पैसे पड़े हुए हैं, ये रिटेन अर्निंग्स हैं, आप इजीली इसको निकाल के इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्विक कैश है, ठीक है। तो क्विकली जो है वो इंजेक्ट होगा कैश इनटू योर बिजनेस। ओके, सो कॉन्स जो है वो बेसिकली क्या है, अगर इफ अ बिजनेस इज न्यू, लाइक अ बिजनेस बहुत न्यू है, अभी उसको फर्स्ट ईयर है ऑपरेशंस का, या इफ मे बी बिजनेस आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ लॉसेस। ओके, if business is new,
ठीक है, रिटेन अर्निंग ही नहीं होगी, there will be no return earning, because if your business is making losses and if your business is totally new, maybe it is a first year of its operation, so how could a business have this retain earning? ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो उसका कौन है वो ये है कि रिटेन अर्निंग ही नहीं होगी, तो इस तरह के बिजनेसेस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ओके, ओके, सो वी हैव आवर नेक्स्ट इंटरनल सोर्स। Okay, so we have another internal source. Okay, so we have another internal source which is sale of unwanted assets. Okay, sale of unwanted assets का क्या मतलब है? Sale of unwanted assets means maybe business have some kind of machinery which maybe businesses are not using for so many years. Okay, maybe businesses have not been like has not been any these type of machineries for so long, like कोई machine ऐसी है जो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बिल्कुल फजूल पड़ी हुई है, यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग, बेसिकली वो फजूल पड़ी भी हुई है और प्लस वो आपको कॉस्ट भी दे रही है। ठीक है, एक तरह से वो उसमें जो है वो जगह भी आपकी घेरी हुई है, अगर आप उसको उठा के सेल कर देते हो तो सो यू कैन यूज दो दैट प्लेस फॉर एनीथिंग एल्स, लाइक आप वहां पे कोई भी प्रोडक्टिव चीज कर सकते हैं, आप वहां पे कोई भी मशीनरी ऐसे लगा सकते हैं जो कि मे बी इम्पोर्टेंट हो फॉर योर ऑपरेशन, आप वहां पे उस मशीनरी को लगा के कोई भी और किसी भी तरह की प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं, आप वहां पे ऑफिस बना सकते हैं, या वहां पे कोई भी यानी कि उस जगह को उस स्पेयर जगह को कोई भी यूज किया जा सकता है। तो अगर कोई अनवांटेड एसेट है या फॉर एग्जांपल कोई प्लॉट है जो बिल्कुल फजूल पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई प्लॉट है, कोई मे बी पार्ट ऑफ फैक्ट्री, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री जो बिल्कुल फजूल पड़ी है, यू आर नॉट यूजिंग that place for your operations or maybe your administration operations, so you're not using this asset, तो unwanted asset कोई भी हो सकता है, it could be it could be machinery, okay, it could be building, it could be a part of your factory, ठीक है, कोई किसी भी तरह का हो सकता है वो एसेट, इट कोई भी फिक्स एसेट, मतलब जरूरी नहीं है कि वो करंट एसेट ही होगा, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इन्वेंट्री हो सकती है, तो वो किसी भी तरह की कोई भी चीज होती है जो बिल्कुल फजूल पड़ी हुई है, आप उसको उठा के सेल कर दो। ठीक है, तो अगर आप उसको उठा के सेल कर देते हैं, एक तो जो आपको वो आपकी जो जगह ले रही है, जो आपको एक वेयर हाउस की कॉस्ट दे रही है, एक तो उसके उससे भी जो है वो एक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप उस जगह का यूज किसी और प्रोडक्टिव बेस में कर सकते हो। दूसरा जो है वो आपको फौरन से पहले कैश भी उससे अवेलेबल हो जाएगा, और उसके भी तकरीबन वही होंगे कि कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई कैश तो नहीं है, यू हैव टू फाइंड लाइक अ कस्टमर फॉर योर अनवांटेड एसेट। ओके, बट ये चीजें हैं, ये इसके प्रॉज हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका एक जो प्रॉज है वो एक ये भी है कि वो जगह किसी और काम में यूज की जा सकती है, इफ इट इज अबाउट द इन्वेंट्री और इफ इट इज अबाउट द मशीनरी। ओके, तो वो मशीनरी पड़ी पड़ी आपको डेप्रिसिएशन भी दे रही है, डेप्रिसिएशन यू नो दैट डेप्रिसिएशन विल लोअर आवर प्रॉफिट बिकॉज इट इज काइंड ऑफ एक्सपेंस, तो इसलिए वो आपको डेप्रिसिएशन भी दे रही है, तो इससे अच्छा है कि आप उसको सेल कर दो, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको हो रहे होंगे अगर आप उस अनवांटेड एसेट को सेल कर देते हो। ओके, ओके, सो जो नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा,
अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मशीनरी पड़ी हुई थी, ठीक है, अभी वो फिलहाल तो हमारे लिए अनवांटेड थी, लेकिन सडनली फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑर्डर्स आ गए हैं कस्टमर के, और उन ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें उस मशीनरी की जरूरत है, बट वी ऑल्सो वांट टू सेल दिस एसेट, सेल दिस मशीनरी, सो व्हाट वी हैव टू डू, so we have another option which is also internal source of finance, and the name of this finance is sale and lease back of non current assets. तो यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट सोल्यूशन है इसका, वो ये है सेल एंड लीज बैक। सो यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सोल्यूशन है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेल एंड लीज बैक, यही बिल्डिंग जो कि शायद अभी हमारे लिए अनवांटेड थी, बट बाद में हमें इसकी अचानक से पता चला कि यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम मे बी यहाँ पे अपना कोई नया ऑफिस बनाना चाहते हैं, मे बी हम लोग यहाँ पे कोई न्यू प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, मे बी किसी भी चीज में हम इसको यूज करना चाहते हैं। ओके, सो वी डोंट वांट टू सेल इट नाउ, we don't want to sell it now because we want to use this building in any kind of operations which is related to our expansion. Okay, so हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये सेकंड ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, हम इस बिल्डिंग को सेल भी कर देंगे और इसको लीज बैक कर लेंगे। सो व्हाट लाइक इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने जिस कस्टमर को ये सेल किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इस बिल्डिंग को 200,000 में, $200,000 में आपने इसको सेल कर दिया, सॉरी सेल कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने इसी बिल्डिंग को लीज पे ले लिया। लीज मीन्स के आपने इसको रेंट आउट कर लिया, बेसिकली लीज लीज का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को रेंट पे ले रहे हो। जैसे नॉर्मली हम लोग कोई भी बिल्डिंग परचेज करते हैं, उसको हम लोग मंथली क्या करते हैं, एक अमाउंट ऑफ रेंट हम पे करते हैं, और उसके बदले में हम उसकी ऑनरशिप ले रहे होते हैं, ठीक है, ऑनरशिप ले रहे होते हैं, बट फॉर ओनली 1 मंथ, जब तक हम लोग उनको पेमेंट कर रहे हैं। ऑनरशिप मतलब ये नहीं है कि आपको परमानेंट ऑनरशिप मिल गई है उसकी, नहीं, जब तक आप उसको रेंट पे करते रहोगे आपको आपको उस एसेट को, उस फिक्स एसेट को यूज करने का राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी एक बहुत बेटर ऑप्शन है कि आपने सेल कर दिया, आपके पास जो है वो $200,000 भी आ गए जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर फॉर एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस, और साथ ही साथ जो है वो चीज भी आपके पास रहेगी, आप सिर्फ सिंपली उसका मंथली रेंट पे करेंगे और उसको यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ओके। so so these are basically internal source of finance. So if we want to evaluate this, अगर आपको इसकी इवेल्युएशन करनी है, so how will you evaluate this? मतलब क्या चीजें ऐसी अच्छी हैं इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में और क्या चीजें ऐसी बुरी हैं, उसकी किन किन सिनेरियोज में जो है वो इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ट है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इवेल्युएशन में जो इसके अब आपके पास प्रॉज हैं, मैं यहाँ पे ओवरऑल जितने भी हमने डिस्कस किए हैं इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल ऑप्शंस। तो प्रॉज में जो सबसे फर्स्ट पे है, देयर इज नो डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द बिजनेस। डायरेक्टली आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि परचेज करनी पड़ रही है, स्पेशली आपको कहीं से पैसे लेकर आने पड़ रहे हैं, कोई भी कॉस्ट आपको नहीं लग रही। तो सबसे एक बड़ा प्रो है वो ये है, ठीक है। तो लीज बैक फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी भी बात करें, तो सेल कर रहे हैं तो पैसे आ भी गए हैं सोर्स, इस सोर्स को यूज करके,
जो मे बी हमने अपनी कंपनी की ये जो बिल्डिंग है वो फॉर एग्जांपल हमने किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए इसको यूज करना था। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैक्ट्री लाहौर में है और आप सर्विसेज फैसलाबाद में भी देना चाह रहे हो, तो फैसलाबाद के अंदर आपके पास एक बिल्डिंग बिल्कुल फजूल पड़ी हुई थी और आप उसको आप सेल करना चाहते हो, बट अचानक से आपने क्योंकि एक्सपेंशन करनी है तो आपने सोचा कि चलो अब लाहौर में सर्विस दे देते तो फैसलाबाद में भी देंगे। ठीक है, तो फैसलाबाद के अंदर भी सर्विस देंगे, तो फैसलाबाद में अगर सर्विस देंगे तो उसमें ये बिल्डिंग जो है उसको भी सेल करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए फाइनेंस की जरूरत है। तो उसको सेल करने करना जो है वो भी इम्पोर्टेंट है और इसको यूज करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने फैसलाबाद में अपना एक ऑफिस ओपन करना है। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको सेल भी कर दो। उससे आपने अगर फॉर एग्जांपल हायरिंग करनी है उस बिल्डिंग के अंदर, जो भी आपके अकाउंटेंट आप हायर करोगे या फिर जो भी मैनेजर्स आप हायर करेंगे, so like you will have to recruit different employees in फैसलाबाद ब्रांच। सो उस सब की के लिए भी आपको जो है वो फाइनेंस की जरूरत है, और उसकी उसकी रेनोवेशन के लिए और हर चीज के लिए, और जो भी एक टोटल आपकी कॉस्ट आ रही होती है किसी भी एक बिल्डिंग को रेनोवेट करने में या फिर उस बिजनेस को चलाने में या फिर उसको एक्सपेंड करने में, तो वो सारी कॉस्ट और सारा पैसा कहाँ से आएगा? इसको आप सेल कर दोगे और साथ ही इसको लीज बैक कर लोगे, तो बिल्डिंग भी आप वही यूज कर रहे हो। ठीक है, और अपना जो है वो एक मंथली पेमेंट दे रहे हैं, और आपने सेल कर दी, वहां से आपको पैसे भी आ गए, और फिर आपने आसानी से अपना काम भी कर लिया। अब स्मूथली फैसलाबाद के अंदर फैसलाबाद ब्रांच में आपके ऑपरेशंस जो हैं वो रन हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है बेसिकली इसकी। हाँ, बट ये है कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट, फॉर एग्जांपल इसका अगर जो है वो 100K रेंट फॉर एग्जांपल अगर आप पे कर रहे हो, तो ये एक जो है वो एक हम कह सकते हैं कि दिस इज आर कॉन, कि ये बिल्डिंग अगर ये हमारी खुद की होती तो शायद हमें ये रेंट पे ना करना पड़ता, और ये रेंट क्या करेगा, ये हमारे प्रॉफिट्स को लो करेगा। बिकॉज फैसलाबाद के अंदर ब्रांच आपकी बिल्कुल अभी न्यू है, आपको नहीं पता कि उसको अभी प्रमोट होने में या फिर कस्टमर आने में कितने साल लगेंगे, बट ये प्रॉफिट जो है ये तो रहेगा। तो सॉरी, ये जो रेंट है ये रहेगा ही रहेगा, ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होगी आपके लिए। ठीक है, ओके। सो इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में सबसे फर्स्ट पे था कि डायरेक्ट कॉस्ट भी बिल्कुल ही नहीं आएगी इसमें। ठीक है, और इसमें कोई भी लाइबिलिटीज नहीं होंगी, ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज नहीं होंगी कोई भी, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। और दूसरा अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि ये सेल एंड लीज बैक के बारे में, तो इसमें क्या होगा, कंपनी विल लॉस्ट इट्स ओनरशिप। ओके, सो ये भी एक प्रॉब्लम होगी कि आपकी ओनरशिप चली जाएगी। And the second thing is that if you will depend on internal sources, so maybe it will affect your growth of business. Because अगर आप totally इसके ऊपर depend हो जाएंगे, because you cannot raise a huge amount from the internal source of finance. If like you want to start a big project for your company, like if you want to start a different what can I say, like a different type of product, if you are going to target any kind of new audience, new customer, and you want to maybe create some variations into your product, and because of this, maybe you have to go through a very large research, large market research, or maybe different kind of, and like any kind of research. So it means that you will have to have a large amount of money, a large amount of cash, a large amount of finance. But in case of internal source of finance, you cannot raise a high amount of finance. ठीक है, इसमें बहुत बड़ा फाइनेंस नहीं,
मतलब क्योंकि प्रॉफिट भी अगर फॉर एग्जाम्पल रिटेन अर्निंग में पे जाते हैं तो उसमें भी आपके पास बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट नहीं होगी। ठीक है। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज फॉर एग्जाम्पल अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के बारे में बात करें, उनके पास बहुत ह्यूज अमाउंट होती है, बट स्टिल जो वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं, जो वो प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, जो 20-20 25-25 साल तक उनके प्रोडक्ट चलते हैं, उनके लिहाज से उस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के हिसाब से वो रिटेन अर्निंग कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। सो समटाइम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज यूज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑल्सो। मतलब कॉम्बिनेशन करके भी आप कर सकते हो। अगर आपको एक ह्यूज अमाउंट राइज करना है, फॉर एग्जांपल यू नीड $100 million, so maybe you have 20 million in your account, like as a retained earning. So you can use 20 million and you can raise other $80 million from maybe raising or maybe selling your shares, or maybe raising finance from the bank, from the debentures. तो ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी समटाइम क्या करती हैं, दोनों चीजों को मिला के चलती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप टोटल 100 million ही बाहर से बोरो करोगे तो इट विल कॉस्ट यू अलॉट, so it will increase your interest rates also. So that is why somewhere it is very important, if you want to raise a maybe a high amount, a huge amount for your company's expansion, so it is a good decision if you use mixture of internal and external sources of finance. Okay. Okay. Okay, so now we are going to talk about the external sources of finance. Okay. Okay, so we have actually two kind of external sources of finance. What the number one is short term. For example, if you want finance for maybe shorter than 1 year, so you can choose this because it is external and it is a short finance, short term finance. ओके, सो शॉर्ट टर्म में चाहिए आपको फाइनेंस और चाहिए भी एक्सटर्नल, तो हमें जो है वो कुछ यहाँ पे वी हैव सम सोर्सेज. So first of all is bank overdraft. Bank overdraft, you must know about this. What is bank overdraft? Bank overdraft में हमें बहुत ही little amount मिलती है as finance, and it is so that is why it is called short term. और ये हमें months के लिहाज से pay करना होता है, maybe after 1 month or maybe after 2 months. And the second, which is trade credit. Okay, and the third one is debt factoring. For example, if one day a supplier come to you and said to you that he needs his 50, maybe 1 lakh or maybe 2 lakh urgently. Okay, or maybe you have to pay any kind of expense which may be related to your office or maybe related to your manufacturing sector, manufacturing or operations, what can I say, department. Okay, so like you don't need to raise a large amount of finance, you don't need to raise 100 million or 200 million. So in order to just cover this situation,
you will need these three types of finance, which is external and it is also short term. ओके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या है कि बैंक अकाउंट आपका ऑलरेडी ओपन होता है बिजनेस का, ठीक है। तो उसमें आम, जो भी आपका कैश बैंक के अंदर अवेलेबल है, उससे उस कैश से ज्यादा अमाउंट निकलवा लेना ओवरड्राफ्ट है। फॉर एग्जांपल आपके बैंक में जो है वो है इस वक्त $100K, ओके। बट फॉर एग्जांपल $100K आपने खत्म कर लिए और आपने जब से सप्लायर को पेमेंट करनी है, और आपका जो बैलेंस है वो इस वक्त फॉर एग्जांपल शो कर रहा है कि आपके पास 100K थे, लेकिन आपने उसमें से काफी एक्सपेंसेस कर लिए हैं, आपने कोई बिल की पेमेंट कर दी है, आपने कोई सप्लायर को दे दिए हैं, जिस भी तरीके से आपने एक्सपेंसेस किए हैं, तो आपके पास फॉर एग्जांपल अब पड़ा हुआ है $10K, ओके। तो सप्लायर को जो है वो फॉर एग्जांपल आपने देना है 30K, तो बैंक आपको 20K जो है वो एक्स्ट्रा दे देगा, ठीक है। और ये 20K को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये 20K जो है वो अब आपको पे करने पड़ेंगे, बट विद इंटरेस्ट। ये इस तरीके से काम करता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। सो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये मोस्ट फ्लेक्सिबल रिसोर्स है फाइनेंस का, ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल है। जितनी भी अमाउंट आपको चाहिए होगी वो आपको पे कर देंगे, बट अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होगी, अमाउंट थोड़ी बहुत हो सकती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल है, और आप डे टू डे जो है वो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, डे टू डे। तो ये बिजनेस की नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है टोटली, ओके। सो एक इस तरीके से ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है।